अभी हम प्रधानमंत्री संग्रहालय में मौजूद हैं और हमारे साथ प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के वाइस चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैलरी जो है वो यहाँ पर शुरू की गई। यहाँ पर आज़ादी के बाद जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी गैलरी पहले से यहाँ पर थी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी गैलरी शुरू हुई। सर, मैं जानना चाहूँगा इस गैलरी में के हाईलाइट्स क्या हैं, उनके जीवन को किस तरीके से यहाँ दिखाया गया है और कैसे ये चूज़ किया गया कि ये कंटेंट किस तरीके से क्रिएट किया गया है यहाँ पर? नहीं, ऐसे हैं कि अब हर एक गैलरी में हर एक प्रधानमंत्री का उनका बाल्यकाल, उसके बाद इनिशिएशन टू पॉलिटिक्स, उसके बाद उनका राजनीतिक जीवन और वो एमएलए बने या एमपी बने वो जीवन, और अब मोदी जी और अन्य प्रधानमंत्रियों का जब वो प्रधानमंत्री बने उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ, तो ऐसे ही इस गैलरी में भी है। और इस गैलरी का विशेष ये है कि पिछले 10 साल मोदी जी का जब वो प्रधानमंत्री बने 2014 वहाँ से अब तक जो काम हुआ है हर एक क्षेत्र में, उसका आप वर्णन यहाँ हम किए हैं, आप देख सकते हैं। सो एक्चुअली द गैलरी बिगिंस हियर, ये शुरुआत है। और ये आप इनका जो ये कविता है इसके साथ ये गैलरी का एंट्री पॉइंट ये है, और आप सुन सकते हैं यहाँ पे खड़े होके सुन सकते हैं मोदी जी को। आगे बढ़ने से पहले एक मेरा छोटा सा सवाल होगा कि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में भी काफी फेजेस आए होंगे। तो इस जो कमेटी बनी होगी जिसमें चयन किया गया होगा कि क्या क्या चीजें उनके जीवन की यहाँ रखी जाए, शामिल किया जाए, उनका मुझे ये जानना था कि उस कमेटी में कौन कौन लोग थे, वो चूज करने की क्या जो है वो तरीका था। As far as content and curation of the प्रधानमंत्री संग्रहालय, including the Narendra Modi Gallery, it has supervised, and every decision is taken by the Executive Council of the Prime Minister's Museum and Library. और हमारा चेयरमैन है श्री विपेंद्र मिश्रा जी, और अन्य सदस्य जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो ये सब निर्णय लेते हैं। इसके अलावा विपेंद्र मिश्रा जी ने कुछ एक्सपर्ट्स को आमंत्रण दिया है हमारे साथ काम करने के लिए, और उनका भी बहुत तगड़ा योगदान रहा है। जैसे एमजे अकबर साहब हैं, और ये हमारा प्रसून जोशी जी है, और हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने विनय सहस्रबुद्धि जी है, डॉक्टर कपिल कपूर है, स्वपन दास गुप्ता है, और ये सब मिलके बहुत काम किया है, बहुत परिश्रम किया है पूरा संग्रहालय के काम में जो है। और विपेंद्र मिश्रा जी ने एक कंटेंट कमेटी अपॉइंट किया था, उनमें और कई लोग शामिल थे, और तो उन्होंने मिलकर इसको पूरा तैयार किया, मिलकर वो कंटेंट को तय किया है। ओके, वी आर इन सुशासन गुड गवर्नेंस। ये गुड गवर्नेंस में है, पहला यहाँ है ये एब्रोगेशन आर्टिकल 370, ये धारा 370 का जो रद्द किया गया, और इसके पहले क्या व्यवस्था थी इन कश्मीर, इसके बाद क्या हुआ, ये सब पूरा डिटेल में यहाँ आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। एंड दिस इज इन माय व्यू a very bold decision, and it's indicative of the assertiveness of the Prime Minister in regard to the responsibilities he handles. And Article 370 abrogation, everyone said that can never happen in India, but Mr. Modi is one such who will never accept, that something can't be done, and he is a person who actually loves challenges. So apart from Article 370, the next one we will go to is women's reservation. Women's reservation in legislature and parliament. ये भी 20-30 साल से चल रहा है बात, लेकिन nobody was able to do it. And then
you look at the this thing, empowerment of women. Armed forces में there is a huge entry of women in the armed forces now, and so many other initiatives in regard to Nari Shakti. Then if we come here, you look at new economy of India and decisive governance हम कहते हैं. इसमें क्या है? आप GST लीजिए. बहुत साल इसके बारे में बहुत जिक्र हो रहा था कि क्या GST मतलब वन कॉमन दिस थिंग फॉर इनडायरेक्ट टैक्स फॉर स्टेट्स एंड सेंटर, बट नोबडी कुड डू इट. जैसे आप हिंदी में कहते हैं पेचीदा मामला, बट मोदी जी सीधा वो he will wade into issues like that. The international relations, here Mr. Modi has visited 64 nations and all his visits are chronicled here. आप इसमें आप या हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं, चाहिए तो आप अंग्रेज़ी में आप कर सकते हैं, नहीं तो हिंदी में. ये सब चीज़ कंटेंट आपको आप देखने को मिलेगा. वियतनाम लीजिए, ओमान, और ये कहीं राष्ट्रों में प्रधानमंत्री मोदी जी को उनका नेशनल अवार्ड्स, जैसे हमारा भारत रत्न है या पद्मा अवार्ड जो है, उसके समान जो जितने राष्ट्रों में मोदी जी को सम्मान दिया गया है, ये हमारे लिए तो भारत के लिए तो बहुत गौरव की बात है, बहुत गर्व की बात है. एंड दैट इज़ अ वेरी मेजर इनिशिएटिव. इसमें आप देख सकते हैं ए प्लेज फॉर अमृत काल. यहाँ एवरीवन हु कम्स हियर कैन टेक ए प्लेज. ठीक है, इसमें कई प्लेजेस है. Pride in our roots. See, I pledge to conserve the rich heritage of the country. I pledge to preserve the folk culture. I pledge to recognize heterogeneity and richness of Indian music. I pledge to promote diverse and savory flavors of Indian cuisine. और आपका नाम डालिए, ईमेल डालिए, ठीक है, और प्लेज लीजिए, वो आपको ईमेल में वो मिल जाता है. दिस इज ऑन चंद्रयान, ठीक है, एंड यू कैन actually a visitor can go and press the keys and see the takeoff of Chandrayaan rocket and all the other maneuvers he can do in order to go right up to the moon and the landing of the lander. Okay? How the lander lands on the moon, you can see that. That is the beauty of this. ऐसे है, this is again very interactive. You can press the key. So welcome to a model village. इसमें ये देखिए, you can use this toggle to move up and down and take it up, and then you come here and you see this citizen walking on this sadak. So it will give you details of प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. 7 लाख किलोमीटर का सड़क बनाया गया है, ठीक है, और प्रेस कीजिए और आप आगे जाएंगे और ये प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको डिटेल्स मिलेगा, ठीक है. ये क्या है? हाँ, PM आवास योजना 2.90 लाख हाउसेस हैव बीन सैंक्शन्ड. और आप घर के अंदर जा सकते हैं और ये देखिए, घर के अंदर जाइए, ये दादाजी बैठे हैं और दादाजी को क्या मिला है? Individuals can avail free treatment worth ₹5 lakh, Ayushman Bharat. Now, if you cut to the Narendra Modi era, what is happening is the Prime Minister, Shilanyas 26 May 2017, and then Udghatan 2023. ऐसे राजकोट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जो भी आप लीजिए, नेशनल वॉर मेमोरियल, केदारनाथ रीडेवलपमेंट, HAL फैक्ट्री तुमकुरू, ओके. हर एक का एक स्पेसिफिक टाइम लाइन होता है. आई थिंक
Mr. Modi keeps a very punishing schedule for himself and expects that of all people who work with him. So, new Parliament House, he laid the foundation stone on 10th December 2020 and it was inaugurated on 28th May 2023. Also, as you know, recently he inaugurated the Atal Setu. The foundation stone was laid in 2016 and the Setu was inaugurated now in 2024 on 12th of January. So this is the tight schedule which he expects for execution of projects for which he lays foundation stone, and we have captured some of those things here. What is special about the Narendra Modi era in governance? You can see that in clear terms in this gallery. Here this is called Jan Bhagidari. Here, you know, he interacts with students, he interacts with citizens of India through Mann Ki Baat, and then you have his interaction with armed forces and all classes of people. So you can just go here, sit down there if you want, put the headphone on and press a button, and there are 150 videos there. You can watch any of that. And this is very interesting. And here, of course, is Modi ji जो शपथ ग्रहण हुआ 2014 and 19. 14 में और 19 में उसका शपथ ग्रहण का आप यहाँ सुन सकते हैं. और ये जो देखिए, ये हेलमेट है, ये वॉच है और ये इनका गियर है. When he flew तेजस अभी कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री ने he went around in the jet fighter, Indian made jet fighter. This is early life, you know, his childhood, and you know, the family. He grew up in a family with in very difficult economic circumstances, indigent circumstances. Then his schooling, and then all that, and and as you know, he was helping out his father in the tea stall in the Vadnagar railway station. And then his mother has been a great influence on him. Really worked hard to build up, raise the family, and the kind of values that she, you know, bestowed on him and his siblings. And then you come to the 71-80 phase, where you know, we come to the end. That is when Indira Gandhi imposed the emergency in 1975. 75 to 77, he was underground, and he was helping the families of people who had been arrested under visa. Then he comes his political activity, his initiation into Bharatiya Janata Party and his role there. And then he becomes Chief Minister of the state, and then he goes on to become the Prime Minister. From 1971, when I became a media person, I've had a ringside seat to governance and politics in this country. And I have traveled extensively with all our prime ministers and watched them in action for 52 years or more. And with that kind of background, I will say that really, when it comes to Mr. Narendra Modi, his energy levels, his capacity to work, and his determination to take on big ticket issues which seem totally intractable, like Article 370 and GST and so on, a whole lot of them. This is something very unique about him. And also, management by objectives. There are timelines for achieving things. This is what I'm seeing in his tenure, and you find all that encapsulated in his gallery in Pradhan Mantri Sangrahalaya.